The big political headline is on the celebration of Constitution Day today, which became a bitter political battle. This as 14 opposition parties led by the Congress boycotted celebrations in Parliament today. The Prime Minister lashed out specifically at the Congress and the dynasty, saying that a party ruled generation after generation by one family is the biggest threat to democracy. The Congress hit back. But first, we saw today at Constitution Day celebrations the reading of the preamble of the Constitution, so significant at this time, led by the President, the Prime Minister and other BJP ministers. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक अर्थनैतिक एवं राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न In Parliament, the preamble of India's Constitution being read by President Kovind to mark Constitution Day. लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए But missing from the audience, around 14 opposition parties boycotted the ceremony, claiming the BJP government is violative of the Constitution and also for not being invited properly. This includes the Congress, the TMC, the DMK, NCP and others. एक से अधिक लोग राजनीति में prompted the Prime Minister Narendra Modi to attack the Congress for dynastic politics. लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। जब सदन में इस विषय पर मैं बोल रहा था 2015 में बाबा साहब आंबेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त इस काम की घोषणा करते समय विरोध आज नहीं हो रहा है, उस दिन भी हुआ था। कभी हम सोचें कि आज अगर हमें संविधान निर्माण करने की नौबत होती तो क्या होता। आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते। The Congress hit back, attacking the Prime Minister and his government of being autocratic. An undemocratic Prime Minister, an autocrat Prime Minister is talking about the Constitution. Even today's function, he has not invited properly to all opposition party leaders. Later, Chief Justice of India, N.V. Ramana, defended judicial intervention, saying it was to nudge the executive. Then there are attacks on the judiciary in the media, particularly social media. These attacks appear to be sponsored and synchronized. Since it started in 2015 by the Modi government to take note of the role of Baba Saheb Ambedkar, considered the author of the Constitution, this is an event that has seen the opposition boycott a number of times. The stage is set for a stormy winter session of Parliament. The government wants to pass and repeal the farm laws bills on the first day, but the intention of the opposition is to continue to raise
people's issues. Either way, both the government and the opposition know that Parliament this time will need to function. With camera person Sashikant, Sunit Prabhu, NDTV.